So another disease, this boy was referred as a chickenpox, and because of the multiple vesicular lesions on the body, and you can see these patients and refer as chickenpox. But I mentioned to you, chickenpox should have a generalized happen on the whole body, but you can see the lesions only happen on the hands and spare on the forearm and also spare on the legs. तो ये भी चिकन पॉक्स का ही तस्वीर है, लेकिन पहले हमने आपको बताया था कि चिकन पॉक्स जो है पूरे बदन में, पूरे शरीर में होता है, लेकिन कुछ इस तरह के भी केस पाए गए हैं जहां पर सिर्फ हाथों में हुआ था। आप देख सकते हैं उनके पीछे बाजू में कुछ नहीं है, उनकी टांगों पर कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाथों में पूरा चिकन पॉक्स के रैशेस हुए हैं। So this we send this fluid for a viral culture and found to be this is not a chickenpox. This is what we call hand, foot, and mouth disease. This is a hand, foot, mouth disease common in young children and most common less than 5 years old, and usually not serious but very contagious and can rapidly spread in school and also in daycare center. तो ये हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के बारे में आप बता रहे हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो जरा ध्यान से सुने कि क्योंकि ये जो बीमारी है स्कूल में और डे केयर सेंटर या फिर छोटे जो किंडरगार्टन होते हैं वहां पर बहुत जल्दी फैलती है बच्चों को। ये ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत ही कॉन्टेजियस है, मतलब कि एक बच्चे से दूसरे बच्चे को बहुत जल्दी हो जाती है। And remember, this disease spread by what we call the fecal oral routes. Usually the virus will present in our secretions, in the nasal secretion, in the stool, and will transmit it by the contact. When we not wash our hands, we will transmit the virus to other people. तो ये जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये जो बच्चे छोटे डायपर पहन के रखते हैं, अगर वो ज्यादा देर पहन के रखें तो वहां पर वायरस पैदा हो जाते हैं, या फिर बच्चे जब बाथरूम जाके आते हैं और अपना हाथ नहीं धोते हैं और उसी हाथ से खाना खाते हैं, तो उस तरह ये ट्रांसमिशन इस बीमारी का हो सकता है। So this is the picture of the hand, foot, and mouth disease. Those are the vesicle on the hands and on the feet. These are the only on the hands and the feet. ये कुछ हल्के हल्के रैशेस हो जाते हैं हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में, और ये इतने इची नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट भी नहीं है। Also some ulcers inside the mouth, and also on the buttock of the patients. Okay, so hand, foot, mouth, and also the buttock. So this is a classical distribution for rashes in the hand, foot, and mouth disease. तो अगर आप देखें कि बच्चों के हाथ में, उनके पाँव में, उनके पैर में और उनके पीछे बटक्स में कुछ इस तरह से रैशेस और कहीं और बॉडी में कुछ नहीं नजर आता, अगर इस तरह से नजर आए तो उनको हैंड फुट एंड माउथ डिजीज का चांस हो सकता है। But one important point to remind parents is the brain involvement, because the hand, foot, and mouth disease, when caused by the EV71 virus, they can have severe central nervous system complications. तो नॉर्मली ये सीरियस नहीं होता है, लेकिन अगर ये EV71 वायरस अगर ये आ जाए तो फिर हैंड फुट एंड माउथ डिजीज भी थोड़ा डेंजरस हो सकता है। So they will have a typical complications, what we call the myoclonic jerks, and this happen in those EV71 infections. And it happens in 1997 and also 1998 and 9 in Hong Kong. ये हांगकांग में भी कई बारी हो चुका है, 1998 में भी हो चुका है recently. Okay. So this is to explain the virus. When they enter our body at around 4 to 8 days, they will enter into the brain, and leading to the symptoms of what I call the myoclonic jerks. तो ये हम बच्चों के ब्रेन में पहुंचते पहुंचते 6 से 7 दिन लगते हैं, इनको बच्चों के दिमाग तक पहुंच जाते हैं और वहां से फिर बाकी के जो सिम्टम्स जो है धीरे धीरे पैदा होते हैं। So I want to show you a video recording of a patient with myoclonic jerks
after the hand, foot and mouth disease. तो ये अभी आपको वीडियो दिखाएंगे जो हैंड फुट एंड माउथ डिजीज में जिस चीज का होना हो सकता है। तो जैसे डॉक्टर कौन ने बताया वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, वैक्सीन लेने से ना घबराएं। Maybe I cannot play this video. Maybe I go to the next slide. No, Okay. कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वीडियो नहीं चल पाएगा। So when a child suffers from the hand, foot and mouth disease, the parents need to beware of a persistent fever, the lethargy and weakness, and the child refuse feeding and rapid breathing, vomiting and drowsiness, and also what I call the repeated jerky limb movements. तो ये कुछ चीजें हो सकती हैं जैसे कि बुखार हो सकता है, बहुत ज्यादा बुखार हो सकता है, और बच्चे को थकावट और ओवरऑल बच्चे को कमजोरी शरीर में फील होता है, खाना खाने से मना कर देते हैं, बाथरूम नहीं जाते हैं, बहुत ज्यादा सांस बहुत चढ़ती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, और कुछ कुछ ऐसे जैसे लिम्ब के जैसे जर्क लगते हैं, एकदम से मूव करते हैं उनके हाथ पैर। So the prevention is to wash the hands and clean and disinfect all the objects that the patient used, and avoid touching the eyes, nose, and the mouth, and avoid close contact with sick people. तो इन सब का प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मेन प्रिवेंशन है कि हाथ धोएं, बच्चों को अपना हाथ धोना सिखाएं कि हर बाथरूम जाने के बाद हाथ धोना चाहिए, खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, डिसइंफेक्ट करें अच्छे से अपने हाथों को, आंखों को, और कोशिश करें कि ये सब अपने आंख, नाक और माउथ को टच नहीं करें अगर हाथ साफ नहीं है, और जो लोग बीमार हैं उनसे दूर रहें। Okay, so the people recover from the hand, foot, and mouth disease. They have a special the nail changes. They have a transverse line across the nails. This is what we call the oligomatosis. This happens around 4 to 6 months after the recover from the hand, foot, and mouth conditions, and this is quite common. And parents can take note of this condition and of their child when they recover from the hand, foot, and mouth disease. तो ये एक और चीज है जो 6 महीने रिकवरी के बाद भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये नाखून का कुछ बीमारी हो गया है, किसी एक केस को 6 महीने के बाद उन्होंने प्रेजेंट किया था कि उनके नाखून में भी इस तरह का बीमारी आ गया था। Okay.